Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine at your homes and I hope you are taking good care of yourself. So children, today once again I am here with you with a new video, and our today's video is based on our activity of vocabulary and cursive writing. So children, today you are having your two activities and we will be doing it now, but we will start with vocabulary first, okay? Then we will do our cursive writing. So let's get started with it. So our first word for today is children, delicious. As you all must have heard this word, and the meaning of this word is yummy. मतलब बहुत tasty, very delicious means बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट. Okay. So try to repeat it with me. Try to pronounce it with me. Delicious, delicious, delicious. Try to include this word in your conversation, children. So with this, moving on to our next word, that is interaction. So our next word, our second word is interaction. So children, meaning of interaction is to talk with each other, that is baatcheet karna, and try to pronounce it with me now. Interaction, interaction, interaction. So our third word for today is children, communication. Communication means sanchar karna, sharing information. So try to repeat it with me. Communication, communication, communication. So children, moving on to the next word, that is knowledge. So our fourth word is knowledge. Knowledge means ज्ञान, किसी चीज के बारे में information होना. Understanding of a fact or a situation is known as knowledge. So try to repeat it with me now. Knowledge, knowledge, knowledge. Our last word is electricity. The meaning of electricity is children, it's a type of energy that helps the machines to run. And in Hindi we call it bijli. So our last word is electricity. Try to pronounce it with me. Electricity, electricity, electricity. So children, these were the words that were in our today's vocabulary. Try to include these words in your day-to-day conversations, and this will obviously enhance your vocabulary. शुरू करो. So children, now we will be starting with our second activity, that is cursive writing. So now we will be doing Hindi as well as English cursive writing. So children, now let's start our cursive writing. So this is English cursive writing. In your notebooks you are having these 4 lines and we will write using these 4 lines only. Children, while writing you have to keep few things in mind, that is, whenever you write, try to join the letters on the line. Touch the lines while you are writing and try to make the proper curves. So let's start writing. One line I have already written and let's do it once again. So let's start writing. Touch the lines बच्चों while writing. सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लिखेंगे तो लाइंस को टच करके लिखना है, अपने आप ही राइटिंग अच्छी हो जाएगी. अब 2 वर्ड्स के बीच में बच्चों इतना गैप रखना है कि आपकी 1 फिंगर टिप उसमें आसानी से आ जाए. ओके, इतना गैप होना चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि 1 word has finished and other is being started. So लाइंस को टच करते हुए हम लिख रहे हैं. See, just touch the lines properly and automatically writing will be good. So this is 1 page, 1 line I have written, children, and rest of the page you have to complete it by yourself. So बच्चों, इसी तरीके से हम हिंदी की राइटिंग भी करेंगे.
तो हिंदी में हमने ये एक सुलेख, मैंने एक लाइन लिखी हुई है। इसी तरीके से मैं आपको अभी एक लाइन लिख के दिखाऊंगी और बाकी की पेज जो है आप खुद से कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऊपर और नीचे लाइंस को अच्छे से टच करेंगे। सो दिस इज शिक्षा, इसमें भी वैसे ही जैसे हमने इंग्लिश में स्पेस छोड़ा था 2 शब्दों के बीच में, वैसे ही हमें इसमें भी 2 शब्दों के बीच में 1 फिंगर टिप का स्पेस छोड़ना है, ताकि हमें पता लगे कि 1 वर्ड फिनिश हो चुका है और ये 2nd वर्ड हमारा शुरू हो रहा है। सो ऐसे ही बच्चों लाइंस को टच करके हम ऐसे लिखते जाएंगे। एंड चिल्ड्रन, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप ये ऊपर लाइन लगाएंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। सो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये लाइन लिख दी है और इसी तरीके से बच्चों आप बाकी की जो लाइन्स है वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे। और बच्चों, आज आपका होमवर्क यही है कि आप ये 2 पेज की राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर लिखकर मैम को भेजेंगे और जो आपके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको भी आप लिखकर सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी मैम को भेजेंगे। एंड चिल्ड्रन, वीडियो बनाना ना भूलें। जब आप ये कर रहे हैं तो प्लीज मेक योर वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।